Namaskar, brothers and sisters, ladies and gentlemen, students and scholars, teachers and trainers, professors, professionals, officers, officials, listener, learners. I welcome all respected doctors and directors. I welcome all adorable ministers and managers. I welcome all honorable advocates, advertisers, administrators and advisors. I welcome the most honorable President Prime Minister Modi ji. I Dr. Rakesh from USA, heartily cordially welcome. Dear friends, it is very nice time, nice place, nice action today that God provided us valuable, precious time to appreciate, admire our holy Indian cultural land. Today's important news regarding Rajasthan Rozgar Sandesh. Rajasthan कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर, विज्ञापन संख्या 7/2025, जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती 2024। राजस्थान आबकारी विभाग उदयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा नियम 1976, संशोधित नियम 2018 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत जमादार ग्रेड सेकेंड भर्ती के कुल 72, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 64 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 8 पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं और जमादार ग्रेड सेकेंड पद का नाम 64, गैर अनुसूचित क्षेत्र 8, अनुसूचित क्षेत्र कुल पद 72। विशेष नोट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर से परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत या असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में
बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 1, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत या निर्धारित ई मित्र कियोस्क और जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को SSO पोर्टल http या फिर sso.rajasthan.government.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व्ड UR तथा रिजर्व्ड के लिए EWOS या फिर NC या फिर MBC या फिर NC या फिर SC या ST या फिर SCH श्रेणी दिव्यांगत की स्थिति का व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई श्रेणी दिव्यांगत की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शंस भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET सीनियर सेकेंडरी 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। CET सीनियर सेकेंडरी 2024 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET सीनियर सेकेंडरी 2024 के डेटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कंप्यूटर पर आवेदन को सबमिट किया जाना आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ईमेल संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की ही गलती माना जाएगा। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। अभ्यर्थी को एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। नंबर 1, अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित ट्रांसैक्शन के लंबित रहने का
सत्यापन समय रहते हो सके सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। नंबर 2, अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं स्वयं की ईमेल आईडी दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती हैं। आवेदक अपने स्वयं के एसएसओ आईडी से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य किसी दूसरी एसएसओ आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं किया हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल pgrssb@rajasthan.government.in पर संपर्क करें। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर 0141292241 या फिर 292238 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 0294305751 पर संपर्क करें। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी समस्याओं और शिकायतों को ईमेल द्वारा pg.rsb@rajasthan.government.in पर ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने या छुपाने पर कोई बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित या फिर सूचित की जाएगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। एक बार यह पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/23 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बारीय पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाएं। सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये। नोट: राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी को जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। पूर्व में एक बार यह पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। कार्मिक विभाग क2 द्वारा परिपत्र क्रमांक क83 कार्मिक या फिर क2 2023-0443 दिनांक 19/4/25 के क्रम में अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल
31 मार्च में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात एक बार ये पंजीयन OTR सुविधा की प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी शुल्क 750 रुपये देकर अपना एक बार यह पंजीयन शुल्क OTR पुनः चालू करवा सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः किसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं के उपस्थित हो जाता है तो उसके आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा तथा वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क दोगुना यानी 1500 रुपये नहीं चुका देता। अतः इसके अनुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। जमादार ग्रेड 2 के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण वॉट नॉट गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय विस्तृत आवेदन में अपनी प्राथमिकता प्रस्तुत करनी होगी कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अपना चयन चाहता है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अपनी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में उल्लेख नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होगा। राज्य आबकारी विभाग राजस्थान जमादार ग्रेड 2 की भर्ती में विशेष योजनाओं की श्रेणियों को दे आरक्षण में शिथिलन या फिर छूट हेतु बैठक दिनांक 28/1/2025 के कार्यवाही विवरण के अनुसार आबकारी विभाग के कार्मिकों का मुख्य कार्य फील्ड जॉब कठोर परिश्रम होने के कारण अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ एवं सक्षम होने के फलस्वरूप समिति द्वारा दिव्यांगता के आरक्षण में 100% शिथिलन या फिर छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त पदों पर भर्ती हेतु दिव्यांगजन श्रेणी को कोई लाभ दे नहीं होगा। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विभाग से प्राप्त अर्थना के अनुसार उक्त पदों का श्रेणीय वर्गीकरण जारी किया जाएगा। विशेष सूचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक 2 विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28/7/2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपायुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के उपरांत पश्चात ऐसी अग्रेषित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संबंधित नहीं किया जाएगा। परंतु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हैं।
राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपायुक्त पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों के नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रवर्गानुसार कैटेगरी वाइज 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनके वे जिनकी वे महिला आवेदक हैं अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण के अनुसार किसी वर्ग या अनारक्षित पद या सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर भारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13/1/2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा एवं 2% परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न महिला श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिए पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न महिला से भरा जाएगा। इस प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिलाओं से भरा जाएगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। पात्र तथा उपायुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी जिनके लिए रिक्तियों को आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणित नहीं की जाएगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश या फिर डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला विवाह विच्छेद महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश या फिर डिक्री इस भर्ती के आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
विशेष सूचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक कर 2 विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में भर्ती सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28/7/23 के अनुसार पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के बाद ऐसी अग्रेषित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी, परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा, परंतु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हों। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधी प्रवर्ग में जिनके महिला आवेदक हैं अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण के अनुसार किसी वर्ग अनारक्षित पद या सामान्य वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13/1/16 के अनुसार महिलाओं हेतु 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा एवं 2% प्रत्येकता विधवा विच्छिन्न महिला श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि विज्ञापित पदों के लिए पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की प्रत्येकता विवाह विच्छिन्न महिला से भरा जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त प्रत्येकता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा या परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिलाओं से भरा जाएगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियों आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला विवाह विच्छेद महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश या डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
परित्यक्ता महिला, विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश या डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085 या फिर 2013 में पारित निर्णय दिनांक 30/8/18 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी विशेष अपील रिट्स संख्या 1116 या फिर 2018 में पारित निर्णय दिनांक 18/9/2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी या एसटी, ओबीसी, एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F2 12 विधि 2/2019 दिनांक 13/2/19 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों नॉन क्रिमिनल को 5% आरक्षण दे है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F71 या फिर कार्मिक या फिर Q2 या फिर 2019 दिनांक 19/2/2019 एवं 20/10/2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दे है। कार्मिक 1-2 कार्मिक के 2 विभाग के परिपत्र दिनांक 26/7/2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षण वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के केवल वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी अन्य छूट का लाभ नहीं उठाया है। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जाति पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। 12 जिले की सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक 13-20 कार्मिक या फिर Q2 या फिर 91 पार्ट दिनांक 16/1/2020 के अनुसार 12 जिले में सहरिया जाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ दे होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों हेतु नंबर का भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा। पॉइंट नंबर ख भूतपूर्व सैनिक नंबर 1 प्रतिरक्षा थल जल वायु सेना सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए, जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2, प्रतिरक्षा सेवा से सेवा मुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे पश्चातवर्ती नियोजन के लिए आहरक बना दे। भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद आरक्षित हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7/12/2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण नीति भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दिशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणित की जाएंगी तथा पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/12/2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F518 DOPA 84 पार्ट 4 दिनांक 1/8/21 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया या हो गई है या आगामी 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा या हो रही है, उसने सक्षम प्राधिकारी से निरक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा या होगी, किंतु पद ग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरक्षेप प्रमाण पत्र या NOC के आधार पर आवेदन करता या करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता है या हो जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी पद ग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के 2 माह की किसी कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हों, तो 5% या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दिशा में और 5% अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित जो भी उच्चतम हो का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/12/2020 के अनुसार आवेदन के समय कंप्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विवाहित हो अनिवार्य नहीं होगा। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कंप्यूटर अर्हता रखेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम 3 माह का प्रमाण पत्र भी कंप्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्य ग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणित की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत लैप्स हो जाएगी। किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रस्थिति स्टेटस खो देगा और वह केवल लोक सेवक सिविल एम्प्लॉय के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरांत
लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्योजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त हो जाएगा, समझा जाएगा। परंतु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा। परंतु यह और किसी यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद के ग्रहण करने की स्थिति में पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद जिसके लिए उसने आवेदन किया है के लिए आवेदन की तारीख ब्यूरो के बारे में स्वतः घोषणा पत्र या वचनबद्ध पत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक या फिर संविदा या फिर अस्थायी या फिर तदर्थ आधार पर पुनर्योजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F531 DOP या फिर A284 दिनांक 21/11/19 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% दे होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से है, अर्थात आवेदक जिस वर्ग, सामान्य वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसे रिक्त पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F31 DOP A11/84 दिनांक 21/11/2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इसने इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F531 DOP और A1184 दिनांक 21/11/2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने नंबर 1 सारणी के स्तंभ संख्या 2 में उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लेखित खेलकूद में किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट या फिर चैंपियनशिप में व्यक्तिगत या फिर टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन। नंबर 2 एशिया ओलंपिक परिषद OCA टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम एशियन गेम्स। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद SAOC टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्य सेफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था राष्ट्रमंडल खेल संघ परिसंघ CGF टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का नाम राष्ट्रमंडल गेम्स। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप।
अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध, एशियन खेल परिसंघ, टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम, विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप। एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध, एशियान खेल परिसंघ। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था का नाम, टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम इसमें है एशियन चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ, इसमें टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स या फिर चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है एशियन स्कूल खेल परिसंघ, इसमें है टूर्नामेंट या चैंपियनशिप का नाम एशियन स्कूल या फिर चैंपियंस। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एनएसएफ द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या फिर चैंपियनशिप में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टूर्नामेंट के किसी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित और ऑल इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप या पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स और नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो। नोट, कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें। कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अंतर्गत खेल प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हों। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी संकित किया है तो बोर्ड ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती के आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र या फिर मिसमैच खेल प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र या डिबार किया जाएगा। दिव्यांगजन विशेष योजन के लिए राज्य आबकारी विभाग राजस्थान जमादार ग्रेड 2 की भर्ती में विशेष योग्य जनों की श्रेणियों को दे आरक्षण में शिथिल या फिर छूट हेतु बैठे दिनांक 28/1/25 को कार्यवाही विवरण के अनुसार आबकारी विभाग के कार्मिकों का मुख्य कार्य फील्ड जॉब कठोर परिश्रम करने के कारण अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ एवं सक्षम होने के फलस्वरूप समिति द्वारा दिव्यांगता के आरक्षण में 100% शिथिलता एवं छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त पदों पर भर्ती हेतु दिव्यांगजन श्रेणी को कोई लाभ दे नहीं है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। अनुसूचित क्षेत्र के उत्तरहित पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता पिता या पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित जाति के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक 1-2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/10/19 के अनुसार इनके अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति जातीय आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F1320 12वीं क2 91 पाठ दिनांक 4/7/16 के अनुसार की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं अन्य सेवा भर्ती नियम 2014 के अनुसार होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर राजस्थान संविदा भर्ती 2022 यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे। अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या F19/280L 1 दिनांक 12/2/81 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम से कार्मिक क2 विभाग ने अपने परिपत्र दिनांक 13/20 कार्मिक क2 91 पार्ट 3 दिनांक 1/6/18 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 19/5/18 बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध के अनुसार के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखंडित करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। नोट: अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन करने भरने, आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण पत्रों के सत्यापन, अनुसूचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार जमादार ग्रेड 2 का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। अन्य शर्तें: नंबर 1, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। नंबर 2, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक फिक्स रिम्यूनरेशन देगा एवं इसके पश्चात अन्य कोई भत्ते या मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, सहकारी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देने होंगे। परिवीक्षा अवधि के अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार दे होगा। परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रशिक्षण पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा सत्यनिष्ठ प्रश्न पर होने एवं स्थायीकरण के लिए उपयुक्त होने का समाधान हो जाने के उपरांत ही परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार दे होंगे, वह स्थायीकरण का पात्र होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता: सीनियर सेकेंडरी from a recognized board or its equivalent examination and computer qualification as specified in the Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Services Rule 1999 O or higher level certificate course conducted by DOIC under control of Department of Electronics, Government of India, or certificate course on computer concept by NIELIT New Delhi, और कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPC सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज्ड अंडर नेशनल और स्टेट काउंसिल और वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, और डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस or computer application from a university established by law in India or from
an institution recognized by the government, or senior secondary certificate from a recognized board of secondary education in the country with the computer science or computer application as one of the subjects, or diploma in computer science and engineering from a polytechnic institution recognized by the government, or Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahavir Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited, or an equivalent or higher qualification recognized by the government. Explanation: the decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the appointment authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by candidate shall be final. In case of ex-service personnel of the rank of non-commissioned officer in the defense services, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह या उससे उपयुक्त चयन ऐसी एजेंसी की उपस्थिति होने की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों में माध्यम से चयन किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी मामला हो। अन्य रोजगार संबंधी योजनाएं आपको कल उपलब्ध करवाई जाएंगी।
Now you are listening news. Diwali GST rebate fuel down. Diwali GST rebate fuel down. Double-digit growth in sale of vehicles in Punjab from Chandigarh. Deluge and DJs. Deluge and DJs slash Punjab's paddy yield to 10-year low from Chandigarh, hit by a triple whammy of floods, untimely rain and DJs. Punjab's paddy yield has dropped by 15% this year, the lowest in at least a decade, according to Agriculture Department's interim report on crop cutting experiments. The estimated average paddy yield till October 31 stood at 5,722 kg or hectare this year. This is the lowest since 2015 or 16, when the average yield was 5,933 kg per hectare. Officials say the final figure for the seasons will be worked out once the exercise is completed. Paddy procurement too has been the lowest in 9 years, with only 156 lakh tons procured, nearly 25 lakh tons short of estimate. This decline in production has come as a shocker, as the area under paddy cultivation rose by 1.5 lakh hectares this season. Widespread floods in August to September destroyed crops across 2.9 lakh acres, and most farmers in these areas lost their entire crop. Indecent rainfall and an outbreak of false summer An outbreak of false stomach disease and comeback of Fiji virus compound troubles for farmers. High Court ends widows' 50-year pension fight, orders release of dues in 2 months. Calls relief a constitutional imperative. From Chandigarh, the Punjab and Haryana High Court has ordered relief for an 80-year-old illiterate widow fighting for her husband's retirement benefits for nearly 5 decades. The court directed the Principal Secretary, Electricity Department, Haryana, to personally verify her claims and ensure the release of all lawful dues within 2 months, observing that constitutional compassion rooted in human dignity and empathy is a guiding judicial principle. Providing relief to a voiceless 80-year-old widow was not matter of discretion but a constitutional imperative. The court said in its detailed orders released on Wednesday. Lakshmi Devi's husband Mahasingh, a lineman to turn substation officer in the Haryana Electricity Department, died in harness in 1974. She received only an ex gratia amount of rupees 626, while other benefits such as family pension, gratuity, leave salary, and provident fund remained disputed. Despite repeated presentation, edit in 2005 and RTI application, authorities failed to resolve the matter, shifting responsibility. Disposing of her petition, Justice Harpreet Singh Barad of the High Court observed that whenever courts fail to the weakest, the constitutional promise stands diminished. But each time they defend the marginalized, the transformative spirit of the Constitution shines in its truest form. South India Living University of Agriculture PM says from
Coimbatore, Prime Minister Modi shares Prime Minister Modi backing organic farming on Wednesday said South India has been a living university of agriculture. Inaugurating the South India Natural Farming Summit 2025 here, the Prime Minister noted that Coimbatore region is home to some of the world's oldest functioning dams and that the Kalinga Rhine Canal was built here in the 30th century. The temple tanks in this region became models of decentralized water conservation systems and this land pioneered scientific water engineering thousands of years ago by regulating river water for agriculture. All Kashmiris being defamed, says CM. BSc student found murdered in UP. Phagwada shuts over attack on Senamen. Russian barrage kills 16 in Ukraine. 18 months pregnant Taki dies in road accident in August. Two held for RSS men murder, three others on run. Police have arrested two men in connection with the November 15 murder of Rashtriya Samsevak Sangh RSS activist Naveen Arora 40 in Firozpur, reports Dinesh Sharma. Police have also identified the mastermind of the attack, Jatin alias Kali, and two others involved in the crime, but they are yet to be arrested. All four men had been hired by Kali to eliminate Arora, said Firozpur Senior Superintendent of Police Bhupender Singh Sidhu on Wednesday. The motive for the murder, however, remains unclear. SSP Sidhu said the reason whether a personal grudge or killing at the behest of others will only be revealed upon Kali's apprehension. SSP Sidhu identified the arrested accused as Harsh and Kanav, both residents of Bharat Nagar in Firozpur. Gurdaspur jail guard kills wife and mom-in-law with AK-47, dies by suicide. From Amritsar, a security guard posted at Gurdaspur district jail shot dead by his wife and mother-in-law with an AK-47 over a martial dispute and then killed himself with a rifle while police asked him to surrender late Tuesday night. Gurpreet Singh, a Punjab ex-serviceman, corporation Jawan posted in the jail along with Punjab police, bagged into his mother-in-law's house in Kuthi village, Durangla block, where his wife had been residing for the past few years, and killed the two, said Senior Superintendent of Police Aditya. Gurupreet then locked himself inside his quarter in scheme number 7 Puda Enclave, said the SSP. Police cordoned off the area as soon as the murders were reported and attempted to persuade him to surrender. Separate teams were disputed around the quarter to avert any further mishap. I asked him to come out, surrender and resolve the matter, but he did not listen. The SSP shared, adding, we also brought his relatives to talk to him, but he refused to respond. According to police, Gurpreet demanded the presence of media persons and said he was mentally disturbed due to ongoing and going on marital dispute pending in court. He kept saying, either you will me either you kill me or I will shoot myself despite efforts to convince him he ended his life, the SSP shared.
The SSP shared police have registered an FIR and initiated an investigation into how Gurpreet obtained the AK-47 rifle and the circumstances that led to the killings. A separate FIR of the theft of weapon was registered. Anmol Bishnoi lands in Delhi, arrested by NIA. From New Delhi, a Delhi court Wednesday sent Anmol Bishnoi, an accused in the murder of NCP leader Baba Siddiq, to 11 days of NIA custody. The NIA produced Anmol, brother and close head of gangsters, Lawrence Bishnoi, amid the security in Patiala House Court around 5 p.m. after the federal agency arrested him upon his deportation from the U.S. Special Judge Prashant Sharma sent Anmol to 11 days of NIA custody on the agency's plea seeking 15 days custodial interrogation. Even Fala Group chairperson had reasons to flee India, ED says. 415 crore rupees tainted funds identified from New Delhi. The Enforcement Directorate had secured a 13-day custodial remand for chairperson of the Al-Fly Group Javed Ahmad Siddiqui, accused of generating over rupees 415 crore dishonestly from students studying in the institution run by him. Seeking his custody during a hearing on the intervening night of Tuesday and Wednesday, the ED claimed that Siddiqui had incentive to the flee India as his close family members are settled in the Gulf. After the court hearing held at the residence of Additional Sessions Judge Seetal Chaudhary Pradhan, which ended at 1 a.m., the designated court sent Siddiqui to ED custody for 13 days. The Enforcement Directorate arrested Siddiqui on Tuesday night after conducting day-long searches against the group linked with persons Faridabad-based AI Alpha University, which is emerging as an epic center of investigation in the number 10 Delhi blast case that killed 15 persons and injured several others. Nitish set to take oath as Bihar CM for record 10th time today. Modi and Shah to attend swearing in from Patna. JDU Supremo Nitish Kumar is set to be sworn in as Bihar Chief Minister for a record 10th time on Thursday.
Nitish had to take oath as Bihar CM for record 10th time today. Modi and Shah to attend swearing in from Patna. JDU Supremo Nitish Kumar is set to be sworn in as Bihar Chief Minister for a record 10th time on this Thursday, days after the NDA secured a landslide victory in the assembly elections. Preparations for the swearing-in ceremony at Patna's historic Gandhi Maidan are in the final stages, with Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, and several top NDA leaders expected to attend. Apart from the main stage, several pandals have also been erected to accommodate VIPs. Elaborate security arrangements have been put in place and over 3 lakh people are anticipated at the event, a senior BJP leader said. Kumar submitted his resignation as the outgoing CM to government Arif Mohammad Khan on Wednesday. He was accompanied by Union Minister Chirag Paswan, RLM Chief Upender Kushwaha and Uttar Pradesh Deputy CM Keshav Prasad Maurya. State BJP Chief Dilip Jaiswal told reporters that the governor accepted his resignation and asked him to continue as caretaker CM till the new government was formed. Kumar was elected leader of the NDA legislature party following meetings of newly elected MLAs, where senior leader Samrat Chaudhary was chosen as the BJP legislature party leader and Vijay Kumar Sinha as the deputy leader. Uttar Pradesh Deputy CM Keshav Prasad Maurya, who was appointed as the central observer for the election of the legislature party leader in Bihar by the BJP, was presented at the meeting. Meanwhile, lobbying among NDA allies finalized cabinet burst continues throughout the day. The new Bihar cabinet is expected to include 16 ministers from the BJP and 14 from JDU, including the party chiefs. Houses said consensus has been reached among NDA partners to appoint BJP's Prem Kumar as the Assembly Speaker. Supreme Court strikes down key provisions of 2021 Tribunals Reforms Act. It is indeed unfortunate that instead of giving effect to the well-established principles laid down by this court on the question of the independence and functioning of tribunals, the legislature has chosen to reenact or reintroduce provisions that reopen the same constitutional debates under different enactments and rules. Supreme Court says the Tribunal Reform Act 2021 is a replica of the struck down ordinance, old wine in a new bottle. The wine wets not the judicial palate, but the bottle merely dazzles. Stability of tenure and protection of vested rights are essential components of judicial independence, and the court's earlier directions on this subject cannot be lightly departed from. Parliament can't override verdicts, says Apex Court from New Delhi. In a major jolt to the centre, the Supreme Court on Wednesday struck down key provisions of the 2021 Tribunals Reforms Law related to the appointment, tenure, and service conditions of tribunal members and presiding officers, stating that Parliament cannot simply override judicial decisions by reenacting these with minor tweaks. The top court made scathing remarks against the Centre for bringing back the same provisions of ordinance in the law. We must express our disapproval of the manner in which the Union of India has repeatedly chosen not to accept the directions of
thus of this court on the very issues that have already been conclusively settled through a series of judgments. It is indeed unfortunate that instead of giving effect to the well established principles laid down by this court on the question of the independence and functioning of tribunals, the legislature has chosen to reenact or reintroduce provisions that reopen the same constitution debates under different enactments and rules. A bench comprising Chief Justice B.R. Gavai and Justice K. Vinod Chandran said in its 137-page judgment the court allowed the plea of the Madras Bar Association and others against the law and invalidated several contentious provisions, including the one which prescribed a minimum age of 50 years for appointments in tribunals. It also set aside the fixed tenure of 4 years for the chairperson and members and the mandate for the committee to recommend a panel of two names for each vacancy, which was seen as giving the executive undue discretion. Stability of tenure and protection of vested rights are essential components of judicial independence, and the court's earlier directions on this subject cannot be lightly departed from, the Chief Justice said. Writing the judgment for the bench, the Chief Justice said the act stands on two identical, already rejected premises. It reproduces the substance of provisions earlier litigations without curing the defects, and it rests on constitutional arguments that the court has already expressly disapproved. The verdict said. Justice Chandra endorsed the views of the Chief Justice and said the Tribunal Reforms Act 2021 is a replica of the struck down ordinance, old wine in a new bottle. The wine wets not the judicial palatus, but the bottle merely dazzles. Goods stolen from Shambhu, buried at Nabha. MC officials' residence say farmers. When the CIA team returned without conducting a search, it raised serious questions about the government's intentions. Kamdur Singh, farmer leader from Patiala. Members of the Bharatiya Kisan Union Azad on Tuesday shared seats to the official residence of the executive officer of Nabha Municipal Council, alleging that goods stolen from farmers during the Shambhu Morcha was buried at the premises. The farmers maintained an overnight vigil, accusing the administration of delaying recovery efforts. According to leader of the farmer union BKU, a reliable tip-off indicated that items stolen from trailers at the Shambhu protest site were buried near a tree inside the EO's residence. A team from CIA staff Patiala visited the location earlier in the day, but left after learning that the suspected recovery site was within the official quarter. No further action was taken, promoting farmers to remain stationed outside the residence to prevent any tampering. The controversy stems from a registered case of trailer theft at Shambhu, in which Pankaj Papu, husband of Municipal Council President Sujata Chawla, is an accused, although Papu had refuted these allegations earlier. He is currently out on bail after farmers staged a major protest 2 months ago. The state government transferred the investigation in CIA Patiala. However, farmers allege that the agency has shown little progress, forcing them to
pursue leadership independently. Farmers leader Gamdur Singh said they have credible information that the stolen goods are buried inside the EO's residence compound. Baltej Pannu is Punjab Ops General Secretary from Chandigarh. Baltej Pannu has been appointed as General Secretary of the Punjab unit of the Aam Aadmi Party. Three members of gang held arms recovered from Kapurthala. The police here on Wednesday claimed to have arrested three members of the gang and recovered 9 country-made pistols along with live cartridges from their possession. The arrested accused have been identified as Amandeep Elias Zaman, a resident of Tashpur in Sultanpur Lodi, Harjit Singh Elias Jita, a resident of Khanpur Dhanda in Nakodar, Jalandhar, and Loprit Elias Baba, a resident of Mahila Bagchi in Jamshedpur, Jalandhar. Major General reviews training activist Aluja leads meeting on OBC welfare, 5 new hostels for working women, 50-year-old woman bludgeoned to death in Abohar from Abohar. A domestic quarrel turned fatal in Haripura village of Abohar on Tuesday night when 50-year-old woman was bludgeoned on to death by her husband with an iron rod, police said. Man seeks exemption from appearing in defamation case from Bathinda. Over 3 years after his last appearance, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann again did not appear in the court of Mansa Additional Chief Judicial Magistrate on Wednesday in a criminal defamation case registered on a complaint by former MLA Nazir Singh Manshia. When it all began 7 years ago, the clash between Hindu groups and Dalit groups took place at midnight on April 13, 2018, when activists of Ambedkar Sena led by Harbhajan Suman put up a hoarding to name the Gol Chowk as Saminder Chand Chowk in the late evening. Phagwada shuts down after attack on Shiv Sena Manson case linked to a 2018 murder from Phagwada. Hindu groups staged a protest as markets in Phagwada remained closed on Wednesday to protest against the attack on Shiv Sena leader Inderjit Karwal's son Jimmy Karwal on Tuesday evening. Bajwa slams government. Step down. Man. Police misuse. 2 shooters arrested for RSS activist killing. Mastermind. 2 others identified. Reason behind attack yet to be accelerated from Firozpur. 9 to 10 teams working, probing all angles. Cambodia's illicit cigarettes landing at Amritsar airport. Extraordinarily high profit margins not only attract organized cigarette smugglers but also tempt leisure travelers visiting Cambodia. Many such travelers, influenced by the potential gains, return with cartons of cigarette. Customs official. No too well even after 5 years, farmer dies by suicide. From Bathinda, 60-year-old farmer Jugraj Singh from Daleon village in Mansa committed suicide after naming 2 officials of Punjab State Power Corporation Limited over complaints of not transferring a tube-well agricultural pump connection in his name. Constable Homeguard
Jawan hurt in stone pelting in UP, 6 held from ETA. A police constable and a homeguard Jawan have sustained injuries after they suddenly came under stone pelting in Chaman Nigaria village of ETA district while responding to a call about a squabble allegedly over a mobile phone between two groups. Civil society slams rouse EC attacks raised seems to be born out of electoral failure from New Delhi. A group of citizens comprising former judges, retired bureaucrats, and veteran armed forces officers have lashed out at Rahul Gandhi for unleashing what they claimed his important race born out of repeated electoral failure to tarnish the dignity of the election commission. Men posing as IT officials intercept ATM cash when flee in car with 7 crore rupees. Five in Assam declared foreigners ordered to leave in 24 hours from Tezpur. Himanta BJP will sweep walls. Gogoi will later contest in Park. The CM has been attacking Gogoi over the last few months, alleging that he and his wife have a connection with ISI. Cyber slavery rocket ghost with Park links held. Profit is Purohit is alleged to be the main agent supplying Indian news to cyber slavery centers run by Chinese cyber mafia in Myanmar and Cambodia, among other places. ED arrested Lalu Ad. Lobbying on among NDA allies in Bihar for cabinet bus from Patna. Lobbying among NDA partners is still underway to finalize cabinet berth. Is a day before the formation of the new government on Thursday, sources said. Decorated cops killed in anti-Naxal opponents in MP from Bhopal. Andhra Pradesh arrest 50 Maoists in major multi-district crackdown from Amravati. Tharoor's praise for Modi's speech draws flag from Congress, New Delhi. High Court grants man divorce, says spouses repeated suicide threats. Threats cruelty from Mumbai, repeated threats by a spouse commits suicide amount to cruelty. The Bombay High Court has said, granting divorce to a man. A bench of Chief Justice Shri Chandrasekhar and Justice Gautam Ankhad in its order passed last week, a copy of which was made available on Wednesday, said that when such conduct is repeated, it becomes impossible for the other spouse to continue the matrimonial relationship. The order was passed on a plea filed by the man challenging a 2019 order of a family court rejecting his applications for divorce. As per the petition, the man got married in 2006, but he and his wife have been living separately since 2012 marital, due to marital disorder. The man claimed that desertion and suspicion, as well as threatening and attempting to commit suicide, were grounds to grant him divorce under the Hindu Marriage Act. The bench in its order said that the couple had been residing separately for over a decade and neither an amicable settlement nor reconciliation was possible between them. The court said the man had referred to several instances of cruelty, but the family court did not consider those
The bench referred to a Supreme Court judgment that shared threats of suicide by a spouse amount to cruelty when such conduct is repeated, whether through words, signs, or gesture. It becomes impossible for the other spouse to continue in the matrimonial relationship in a peaceful environment. As the High Court said, the allegations of suspicions and the attempt to commit suicide indicate the wife's conduct towards the husband, the court said. The High Court said it was no longer possible for the couple to live together and hence a decree of divorce deserved to be granted. Supreme Court says can't pass orders protecting talks involved in Arkigar protesters. Any such decision taken would interfere with authority of police. From New Delhi, the Supreme Court on Wednesday said it cannot pass blanket orders protecting doctors involved in protests in the aftermath of the rape and murder of the trainee doctor at the Arjikar Medical College and Hospital in Kolkata. A bench of Justice M.M. Sundaresh and Satish Chandra Sharma said any order passed would amount to interference with the authority of the police. Observing that the matter cannot be heard. Piecemeal, the apex court said it was inclined to transfer the matter to the Calcutta High Court. We are grappling with so many things and there is no end to this. It is easier for the Calcutta High Court to monitor protest. Is it possible for us to monitor the protest in Kolkata sitting in Delhi? How can we pass blanket orders protecting doctors? The police has a right to call you. The bench observed orally. The top court directed senior advocate Karuna Nandi, representing the Association of Junior and Senior Doctors, to submit a table of matters pending before the Calcutta High Court. During the hearing, Nandi submitted the protesting doctors were being harassed by the police and were called for interrogation repeatedly. She sought directions from the apex court that protection be given to the doctors. The matter will now be heard after winter vacations. The body of the postgraduate trainee doctor was found in the hospital's seminar room on August 9 last year. Kolkata police arrested Sanjay Roy, a civic volunteer, the next day. On January 20, a Kolkata trial court awarded convict Roy lifetime imprisonment till death in the case. The heinous crime triggered nationwide outrage and prolonged protest in West Bengal. The apex court, even after the primary conviction, is monitoring multiple ancillary issues including regularizing the unauthorized absence of doctors. While taking suo motu notice of the case, the bench constituted a national task force on August 20 last year to formulate protocol to ensure safety and security of medical professionals in the wake of the crime. In November last year, the NTFE in its report, part of the central government's affidavit, said a separate central law to deal with offences against healthcare professionals was not required. The panel said state laws had adequate provisions to address minor offences besides serious ones under the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. In a slew of recommendations, the NTF said 24 states had enacted laws to address violence against healthcare professionals while defining the terms healthcare institutions and medical professionals. Initially investigated by the Kolkata police, the case was transferred to the CBI on August 13 after the Calcutta High Court expressed dissatisfaction over the former's investigation. The top court subsequently assumed oversight of the
Metro on August 19, 2024. UPATS seeks details of madrasa staff students from 8 districts from Lucknow. Iraq down UAE to keep hopes live from Basra. From Basra, Curacao qualify and make history from Kingston. Scotland stunned Danes to NWC drought from Glasgow. Laksha leads Indian charge to second round. Assam deny Bengal outright win. Arjun loses as Indian challenge ends. From Panji, England keep options open. From Perth, slotting IT right. Even as finding a long-term solution for the number 3 position assumes priority, Team India has to ensure Washington gets a stable role in the top order. Gill travels to Guwahati but remains uncertain to play. Uttarakhand plans spiritual ego Jones to boost tourism. CM Mamata Banerjee expressed shock and sadness over Shanti's death and blamed the unbearable pressure of the ongoing SIR work from Dehradun. Mamata blames ECI for Jalpaiguri BLO's death. BJP hits back from Kolkata. PM says India on path of becoming global hub of organic farming. From Coimbatore, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said India is on the path of becoming the global hub of organic farming. The asserted that it is native and traditional to the nation. The youth are increasingly recognizing agriculture as a modern and scalable opportunity, and this will greatly empower the rural economy. He said, inaugurating here the South India National Farming Summit 2025 and also an exhibition fresh from his NDA's stunning victory in Bihar. Modi quipped, citing the audience weighing their towel upon his arrival that it looked like Bihar winds had arrived in Tamil Nadu before him. Supreme Court to give its opinion on praise reference today. From New Delhi, a five-judge bench of Supreme Court led by CJI B.R. Gavai will on Thursday give the opinion on the presidential reference questioning Supreme Court's power to fix timelines for the president and governors to grant, refuse and withhold assent to bills passed by assemblies. A bench of CJ Gavai, CJI designates Suryakant and Justice Vikram Nath, P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar will give his opinion on the reference in which the president has also questioned the use of exclusive powers by Supreme Court under Article 142 of the Constitution to grant deemed assent to bills pending with the governor. The reference by the center through president was sent to Supreme Court on May 14, nearly a month after a bench of Justice J.B. Pardiwala and R. Mamdavin took the extraordinary step of granting deemed assent to 10 bills passed by Tamil Nadu Assembly which were pending with the governor for months and fixed timeline for the governor and the president to grant or refuse assent to bills passed by states assemblies.
Supreme Court doubts legality of talaq notice sent through lawyers. Should a civilized society indulge in such a procedure? Asked court. Deprecating the actions of the advocate husband, the bench asked him to follow the Sharia law procedures and give a valid divorce to the woman who was present in court from New Delhi. Supreme Court on Wednesday questioned the validity of the practice among Muslim men to authorize a lawyer to send notices to his wife for divorce through three talaqs, each notified after a month's gap, and said this would not be regarded as a valid annulment of marriage as the notice do not bear the man's signature. Appearing for a TV journalist petitioner questioning the Muslim man's unilateral right to divorce through triple talaq under Talaq-e-Hassan process, senior advocate Rizwan Ahmed told a bench of CCI designate Suryakant and Justice U. Bhujan and N.K. Singh that her advocate husband sent talaq notices through a lawyer finalized divorce and remarried. When a talaqnama does not bear the husband's signature, it is not a valid divorce document. If based on this document, the woman remarries, the man can later accuse her of polyandry by claiming he has not validity divorced the woman. Moreover, whenever she wants to remarry, the other man can decline, citing the invalidity of the divorce's document. Ahmad said when senior advocate Amar Shamshad attempted to justify the advocate husband's action, terming it as a custom prevalent among Muslims, Justice Kant-led bench asked, how can this be a valid practice? The notice says for talaq and talaqnama must have the signature of the husband. How can a third party give the woman notice on behalf of her husband? Is this legal? How are such innovations made to give in illegal? How are such innovations made to give talaq? How is the community permitting such a practices? We will not permit such processes to harm the dignity of the Muslim woman. No one can give authorization to a lawyer or any other person to give talaq notice to a woman on his behalf. If tomorrow the husband says he has not authorized the lawyer, what will happen to the woman? We have seen in many cases where the client have disowned the ears, the bench said. Deprecating the actions of the advocate's husband, the branch asked him to follow the Sharia law procedures and give a valid divorce to the woman. Benjir Hina, who was present in court and narrated how she had been made to run from pillar to post after being virtually abandoned by her husband after paying a total alimony of rupees 17,000. Supreme Court asked her to file an application seeking appropriate directions for her and child's welfare and education. We will do the needful, it assured Justice Kant said. We salute her for gathering courage to move the court challenging the unilateral talaq-e-Hassan process of divorce. Think of the condition of millions of Muslim women, illiterate and living in rural areas. What would be their plight? The relief cannot be confined to those women who have the wherewithal to move. The Supreme Court we will decide the
validity of Talaq-e Hassan after a detailed hearing. Punjab loans 37% rise in two-wheeler sales report. Widow forced to run from pillar to post for 30 or 50 years, High Court says. Beyond reason, knowing intuitive mind. Intuition is often regarded as a glimpse of inner truth arising spontaneously and independent of logical deduction. When cultivated, this inner guidance can steer one towards the knowledge of one's true self. In Vedantic and other spiritual philosophies, self-realization refers to the awareness of one's essential nature beyond ego or personality. This is the recognition of the self, Atman, and as reflection of fragment of the universal consciousness Brahma. Intuitive guidance then can serve to self-realization as it bypasses the analytical mind and taps into a micro and more fundamental layer of awareness that is directly connected to this universal consciousness. Intuitive experiences dissolve boundaries between self and the world, fostering a profound sense of oneness as a union with the divine or the absolute Buddha. Delved into depths of his being, he gained access to a vast wellspring of wisdom that surpassed the boundaries of intellectual knowledge. Through intuitive insight, he effortlessly grasped the fundamental in the nature of suffering, impermanence of all phenomena, and the path to liberation from the cycle of rebirth and suffering. A quote often misattributed to Albert Einstein suggests the intuitive mind is a sacred gift and the rational mind a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. This gift is a wellspring of creative vision, a manifestation of an almost transcendent awareness that cannot be fully captured by intellectual analysis alone. Intuition arises from an innate, often mysterious connection with universal truths, being wisdom and logic might struggle to decipher or even knowledge. The perspective speaks of the broader woman dilemma of discerning between the seen and unseen, the measurable and immeasurable. In privileging the rational, society often diminishes profound wisdom that intuitive awareness brings, reducing its role in our lives to margins. True wisdom lies in harmonizing these faculties, allowing the rational mind to perform its diligent role while remaining open to the boundless insight that intuition offers, thereby embracing a fuller, richer, and more integrated understanding of life. Intuition arises from an innate, often mysterious connection with universal truth, bearing wisdom that logic might struggle to decipher or even acknowledge. Intuitive experiences are often mystical, inexplicable to describe in words, as they involve a deep sense of connection that goes beyond ordinary limits of human experience. Some describe these experiences as kind of union with the divine or the absolute, in which the boundaries between self and the world dissolve and a sense of oneness is achieved. Gita suggested that complete self-surrender to higher power can be an intuitive
guidance leading to self-discovery and a deep appreciation for interconnectedness of all things. Chula to Jhula, women now swing the vote. Trial and terror. Terrorism cases need speedy disposal. Supreme Court 6-month guidance should jolt government to beef up NIA, court and NEA. Death sentence for Bangladeshi democracy. Two analysts write on the capture of judiciary and fallout of Hasina's partial trial on Bangla politics. What SIR doesn't get about votes. Voting is a constitutional entitlement, but Supreme Court interprets it as a right subject to ordinary law. TN, Bengal and BJP. Redford, no game, blast, lay bare, big babs. Only 16 farm fires in Punjab, from Bathinda, from JNU to PU, a 55-year cycle of campus politics identity battles. In 1970 it was Johnson versus Akalis, now it is BJP versus all.
Bradford now game blasts lay bare big gaps. After somewhat heady celebration of Operation Sindoor, the nation has now been jolted by a disastrously mayhem triggered by a corner terrorist on the run. His car 120 blew up near the iconic Bradford, accounting for 13 fatalities and 24 injured civilians. There has been some ambiguity about it being an accident or desperate civilian action by Dr. Umar. It was an alert police inspector working under a doctor turning SSP who literally stumbled on an extensive terrorist web. It originated from notorious area of Pulwama and no game has persisted diary. It could include a core group assisted by 25 accomplices, as many as 6 doctors and 2 clerics have been arrested and few more detained, including a woman doctor. She was tasked to set up Jamaite ul Momita movement swimming wing. Will follow protocol for Bandi Singh's release. Punjab BJP Working Chief, Punjab BJP President Sunil Jakhod added that earlier orders by the Prime Minister would stay implemented in letter and spirit, with detailed clarification expected soon from both the party and the central government. From Patiala, Punjab BJP Working President Ashwani Sharma speaking at a party event to mark the 35th martyrdom year of Guru Tegh Bahadur on Wednesday reaffirmed that the release of Sikh prisoners known as Bandi Singh would follow constitutional protocol and court procedure. Punjab BJP President Sunil Jakhod noted that 7 of the 9 prominent such prisoners had already been granted parole. Sharma said BJP's position on the issue, although sensitive, aligned with constitutional provisions. He emphasized that he cannot interfere in court matters where some protocols, including compulsory apologies, must be respected. Jakhar added that earlier orders by the Prime Minister would stay implemented in letter and spirit, with detailed clarification expected soon from both the party and the central government. The issue of Bandi Singh Sikh prisoners convicted during Punjab's militancy era laws such as the now defunct Terrorist and Disruptive Activities Act remained complex and emotive. Although most prisoners have completed their sentences, some of them remain incarcerated, prompting calls for their release. In 1920, the Century issued a notification promising the release of 8 such prisoners. The notification was intended to mark the 515th birth anniversary of Guru Nanak. The event reflected a gesture of goodwill. While some prisoners were granted parole after the 2019 notification was partially implemented, others, most notably Balwant Singh Rajwana, whose mercy petition is still pending before the Supreme Court, remained in jail. The delay has led to the frustration and renewed demands for clemency and humanitarian consideration based on age,
conduct and completion of sentences. Union Minister Gajendra Singh Shekhawat and BJP National Secretary Narendra Singh Rana also paid obeisance at Takht Keshgढ़ Sahib at the end of the end, Gyani Ranjit Singh, head Granthi of Gurudwara Shri Bangla Sahib, Delhi, and Shekhawat said today is not only a day to remember Guru Tegh Bahadurji's martyrdom, but also a day to draw inspiration from his sacrifice, life, teachings, and conduct, and to imbibe them in our own lives. Only 16 farm fires in Punjab, 110 fires in Jinn, crackdown from Jinn. Only 16 farm fires in Punjab from Bathinda. Punjab recorded only 16 stubble burning cases on Wednesday, taking the season's total to 5,034. From GNU to PU, a 55-year cycle of campus politics, identity battles in 1970. It was Jansangh versus Akalis. Now it is BJP versus all. Bitterness was already brewing over a few issues between SCD and Jansangh when things reached a flashpoint in June 1970 over JNU jurisdiction. Amritpal goes to High Court for winter session of Lok Sabha from Chandigarh. 20-year jail for duo in Sirsaj 1.7 crore rupees mad toxicants case from Hisar. A special court in Sirsa sentenced two medical drug traffickers to 20 years of rigorous imprisonment in an Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act NDPC case. The court also imposed a fine of rupees 2 lakh each on the convicts Nirbhay Singh of Rodi Sirsa and Amit Chawla of C Block. The judgment was delivered by Additional Sessions Judge Seema Singhal. The case relates to one of the biggest seizures of medical intoxicants in Sirsa in 2018. Then Assistant Superintendent of Police Sirsa Narendra Bijaria led a raid on warehouse located in the UCO Bank lane of the Grain Market, where police recovered a consignment of intoxicant medicine worth nearly rupees 1.75 crore. Nirbhay Singh was arrested on the spot, while key supplier Amit Chawla was arrested later. According to the case filed in March 2018, a joint team leader ASP Narendra Vijarnia, CTM Ved Prakash Beniwal, BDPO Ravi Kumar, and Health Department officials raided the warehouse. Senior drug officer N.K. Goyal and drug officer Suresh Chaudhary examined the recovered medicines and confirmed they were drugs commonly used for substance abuse. After 5 years trial, priest gets 20-year RI for raping minor. Hisar High Court rejects bail to Rampal's Kane accused of training his militia. Say charges serious, cites injuries to 111 cops during November 2014 clash from Chandigarh. The Punjab and Haryana High Court on Wednesday declined to grant bail to a former army official and son-in-law of controversial preacher Baba Rampal in a case involving charges of sedition and violations under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA. The allegation pertained to his role in providing training to members of a mini army allegedly maintained by Rampal and the one that clashed with police in November 2014. The appellant is the son-in-law of the other main accused, Baba Rampal, who has lakh of followers in the
state of Haryana. Therefore, it cannot be ruled out that these witnesses could easily be influenced by the appellant, which could result in altering the course of the appellant's trials in his favor. The High Court observed. A division bench comprising Justices Deepak Sibal and Lapita Banerjee passed these orders while dismissing a plea filed by Sanjay Elias Fauzi, who is Rampal's son-in-law. The High Court also observed that there were serious allegations against Sanjay of having imparted military training to the members of the military mini army being maintained by his father-in-law Baba Rampal, and that it was the appellant who orchestrated the attack on police party and other government officials who were attempted to enter Rampal's ashram to execute warrants of arrest issued by the court. This attack resulted in 111 police officials getting injured due to firearm and burn injuries, the High Court observed. The High Court was of the view that for 7.5 years, in spite of best efforts by the police, the appellate absconded and evaded arrest. Thus, he was influential enough to holding the law, and that too for such a longer period. And this is in spite of the fact that he is alleged to have supervised an attack on police officials who were desperately looking out for him. The bench, however, directed the state to produce all its material witnesses within 4 months from the date next fixed in the appellant's trial, after which the appellant is granted liberty to renew his prayer for the grant of regular bail. In his plea before the court seeking regular bail, the counsel for Sanjay submitted that 146 out of them had been granted bail, and the appellant stood acquitted all the in all other criminal cases that he faced. The counsel said that on August 1, the trial court ordered the holding of a de novo trial, and therefore the appellant's trial will take a long time to conclude, especially when the prosecution had cited as many as 425 witnesses. The counsel added that the appellant had undergone over 3 years and 3 months of actual custody, though the only allegations against the appellant were based on disclosure statement by a co-accused in police custody, which, in the absence of corroboration, had no value in law. The counsel also pointed out that no recovery had been made from Sanjay opposing his plea. The state submitted the being Rampal's son-in-law and ex-serviceman. The appellant used to train Baba Rampal's followers on how to use weapons. When the police officials attempted to enter Rampal's ashram, it was the appellant who started firing and showing off petrol bombs on the police party, resulting in 111 police officials getting injured for 7.5 years. The appellant absconded and evaded arrest. The appellant was acquitted in the FIR laws against him for having been declared a proclaimed offender only on technical grounds, as such FIR was based on a police report and not a complaint. NBFC seek changes in debt recovery laws from New Delhi. SEBI to ease absconding, SEBI to ease onboarding of foreign investors from Pandey from New Delhi. SEBI chief Twin Kanta Pandey said that regulator is examining whether netting of settlements for trades executed on the same day can be permitted for FPIs. New character steps into Bezos' $533 million mystery.
BJP will make Kong MLA fit into hatchback in 27 polls, LOP says from Shimla. Anti-drug operation, 33 people held, 25 cases registered from Shimla. Shimla DC approaches police after misuse of identity on WhatsApp from Shimla. Mercury continues to fall as winter tightens grip in HV from Shimla. Mission Sambhav in Manali, 2500 kids pledged to stay away from drugs from Shimla. Sukhu launches 12 key projects with 383 crore rupees in June from Shimla. Tribute to ex-PM Indira Gandhi from Shimla. Engineer fined 10K rupees for misleading report on NH from Shimla. Parasocial is Cambridge Dictionary's word of 25 Delilu. Stop new entrants from London. China to half Japan seafood imports amid Taiwan's threat from report. No farm will be immune if AI bubble burst, PCI says from London. Chinese spies posing as headhunters to collect information MI5 wants lawmakers. Saudi Crown Prince seeks to burnish image cor- with corporate America's top executives. Washington, Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman will rub shoulders with many of corporate America's most powerful executives on Wednesday, a day after President Donald Trump reintroduced him to official Washington with a glowing endorsement from the White House. The CEOs from Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics, and Pfizer will attend the US Saudi Investment Forum at the Kennedy Center in Washington. According to the events program, as well as senior executives from IBM, Alphabet, Google, Salesforce, Anderson, Horowitz, Boeing, Halliburton Aboard, Aramco, State Street, and Parsons Corp. Japan to restart world's biggest nuclear plant, claim reports from Tokyo. Japan is set to give the green light this week to restart the world's biggest nuclear plant. Local media reported Wednesday the resource poor country pulled the plug on nuclear power after the 2011 Fukushima disaster, but it wants to revive atomic energy and reduce its dependence on imported fossil fuels. Curfew imposed in Bara district after clash between Gen Z youth CPN UML cadre from Kathmandu. Indonesia raises alert level as volcano near Bali erupts from Surabaya. Russian attack on Ukraine, Bangladesh leaves 19 dead, 66 injured from Lviv. Pakistan to build an island to boost oil exploration. US Congress votes foreign 27 to 1 for release of Epstein files. Praise Trump expected to sign bill once it reaches his table. CM Sani to state farmers, focus on value-added crops from Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday released the 21st installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana into the accounts of farmers across the country from Coimbatore, Tamil Nadu. On this occasion, rupees 316.38 crore was directly transferred to the accounts of 15.82
52 lakh farmers in Haryana. A state level function was organized in Pulwama district where Haryana Chief Minister Naib Singh Saini attended as the chief guest, expressing gratitude to the Prime Minister on behalf of the state's farmers. The Chief Minister stated that rupees 14.89 crore was credited today to the bank accounts of 74,299 farmers in Palwal district. With this 21st installment, a total of rupees 7,233.74 crore was disbursed to Haryana farmers under the PM Kisan scheme so far. In his address, Chief Minister Naib Singh Saini highlighted that Prime Minister Narendra Modi is consistently working to empower farmers and enhance their prosperity. He urged farmers to move beyond traditional farming, focus on value-added crops, establish farm processing units, adopt the farm-to-farm model, and promote agriculturism and branding. Saini said that Prime Minister Narendra Modi has emphasized four key pillars to achieve the vision of a developed India by 2047. Farmers, the poor, women, and youth. He highlighted that the prosperity of farmers, the first pillar, is crucial to realizing this vision. He added that by the year 2047, when India celebrates the centenary of its independence, farmers will be self-reliant, water and environment conscious, digitally empowered, connected to global markets, and a center for high quality branded produce. Referring to the various schemes implemented for farmer welfare, the Chief Minister said that when under the Prime Minister's leadership, farmers have become the center of national policy. The government is also encouraging horticultural crops as an alternative to traditional crops, he said. Haryana behind Bihar in law and order, Khuda Singh from Chandigarh. No mining after sunset, says PKLDS. DC Satpal Sharma has sought detailed report from the mining department on all actions taken against illegal mining over the past 2 months from Panchkula. Two top athletes booked for celebratory fighting at wedding from Rohtak. Rumors of Mohali village merging with Ropar district triggers stir from Mohali. The controversy surfaced after claims circulated that 35 villages under Gharuan area of Kharad were being considered for transfer to Ropar. Truck loaded with banned drugs seized from Mohali. All Kashmiris being defamed for exchange of some, CM Omar says from Srinagar. I thank all my brothers and sisters, ladies and gentlemen, students and scholars, teacher and trainers, professor, professionals, officer, official, listener, learner. I thank all respected doctors and directors. I thank all honorable minister and managers. I thank all honorable advocates and president and administrative advisor. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice day. Nice to see all of you. Thank you very much.